The diagram shows a ring of mass 2 kilograms that's threaded on a fixed rough horizontal rod. Sorry, vertical rod. It's a rough vertical rod. Rough क्यों लिखा हुआ है इसने? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर फ्रिक्शन है. ठीक है? 2 kilograms is the mass of the ring, so the weight is going to be 20 Newton. That's acting downwards like this. Now a light string is attached to the ring and is pulled upwards at an angle of 30 degrees to the horizontal, like this. The tension in the strings is T Newton. This is the tension. The coefficient of friction between the ring and the rod is 0.24. That's another thing that you're given. And it says find the two values of T for which the ring is in limiting equilibrium. Two values of T for which the ring is in limiting equilibrium. Now, where are we going to get, why do we have to find two values? Two values kahan se aa rahi? Let's think about that. We have this ring. What forces are acting on this ring? Sorry? Tension आपको नजर आ रहा है. Weight भी आपके पास ये आ रहा है. What else? Friction. Okay. Reaction. Normal reaction किस डायरेक्शन में होएगा? Left side के ऊपर. Yeah. Rod के perpendicular होगा. That's the condition that we have for normal reaction. So it's either going to be like this or like this, right? ये दो possibilities हो सकती है because rod के surface के perpendicular होना चाहिए. Now we have to figure out is it the right side or the left side. Reaction is always, a force, as the name suggests, ये किसी force को react कर रहा होता है, उसको balance कर रहा होता है. तो perpendicular to the rod आपकी कौन सी force लग रही है? Tension का component right पे लग रहा है. Reaction उसको oppose करेगा ताकि ring horizontally left right ना move कर रही हो. So reaction किस side पे लगेगा फिर? Reaction आपका होगा left side के ऊपर. This is reaction. So this is your reaction. एक तो ये force हो गई. Now it's a rough rod, so there's going to be friction as well. What direction is the friction going to act in? Downwards? Friction कहाँ लगेगी? We don't know because we don't know which force is greater. We have weight of the object that's acting downwards, that's 20 Newton. Tension का component ऊपर लग रहा होगा, which is T sine 30. Now, whichever force is greater, T sine 30 or 20 Newton, friction will oppose that. Sorry? Yes, so we will have to consider two possible cases. क्योंकि उसने कहा है find the two values of T for which the ring is in limiting equilibrium. Now we don't know which side the ring is just about to move in. There are two possibilities. या तो ring ऊपर को move करने लगी है, फिर limiting equilibrium में है, या फिर ring बिल्कुल नीचे को move करने लगी है, फिर limiting equilibrium में है. नीचे को तब move करने लगेगी जब 20 Newton force ज़्यादा होएगी, जब नीचे वाली force ज़्यादा है. When this force is greater, ring will be just about to move downwards. When T sine 30 is greater, ring will be just about to move upwards. ये दो possible cases आपके पास आएंगे. एक में friction ऊपर लग रही होगी, एक में friction नीचे लग रही होगी. तो ये दो cases आपको consider करने पड़ेंगे. Does that make sense? क्योंकि यहाँ पे friction की direction obvious नहीं है, और उसने आपको कहा है कि find the two possible values for T for which the ring is in limiting equilibrium. Limiting equilibrium तो उसने बता दिया, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस साइड पे मूव करने लगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम डिसाइड नहीं कर सकते एट दिस पॉइंट. सो वी कंसीडर टू केसेस. केस वन, ring is just about to move upwards. When the ring is just about to move upwards, which direction does the friction act in? Downwards. Friction की वैल्यू किधर होगी? नीचे की तरफ होगी. The second possibility is ring is just about to move downwards.
When the ring is just about to move downwards, friction is going to act in the upwards direction. ये दो पॉसिबल केसेस हो गए आपके पास. अब इन दोनों केसेस के अंदर आपने देख लेना लिमिटिंग इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है और ऑपोजिट फोर्सेस को इक्वेट कर देना है. You'll find the value of T in each case. Sorry about that. ठीक है, ऑपोजिट फोर्सेस को आपने क्या करना है, इक्वेट कर देना है. Now let me just resolve this force first. टेंशन के कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, एक आपका राइट साइड पर आएगा which is T cos 30 and one is going to be in the upwards direction which is T sin 30. ये आपके कंपोनेंट्स बन गए. अब हम देखते हैं दोनों केसेस में क्या करेंगे. Let me just copy those figures here. ये आपका फर्स्ट केस हो गया. Okay, so you've got two cases. In the first case, the ring is just about to move upwards. When it's about to move upwards, friction कहाँ लगेगी, नीचे वाली साइड के ऊपर. So you've got this force acting downwards like this. So first case में हम opposite forces को equate कर देते हैं. R should equal T cos 30, T sin 30 should equal F plus 20. ये आपके पास दो equations आ जाएंगी. ठीक है, जब आपने फ्रिक्शन नीचे वाली साइड पे assume की तो आपके पास ये दो इक्वेशंस बनेंगे. इससे लेफ्ट वाली फोर्स को राइट का इक्वल कर दें. दैट गिव्स यू R इक्वल टू T cos 30. अपवर्ड्स फोर्स को डाउनवर्ड्स फोर्स के इक्वल कर दें. T sin 30 इक्वल्स F plus 20. Now the first equation gives you R equals square root of 3 over 2 times T. This gives you T over 2 equals F plus 20. Now since we're talking about limiting equilibrium, तो friction की value किसके equal है, mu r, so we have mu r plus 20 here. Do we know the value of mu? It's given in the question. It says it's 0.24. Mu is 0.24. वो यहाँ पे input कर दें. R को भी इसके अंदर input कर दें. That's square root of 3 over 2 times T plus 20. We'll solve this equation. We'll find the value of T from this. T को एक साइड पे ले जाएं तो आपके पास ये हो जाएगा 1 over 2 minus 0.12 square root of 3 equals 20. We get the value of T from this. What do we get? 68.46. So that's 68.5 Newton because this is our final result. इसने कहा था find the value of T. Find the two values of T. एक value of T आपके पास आ गई. In the first case, when the ring is just about to move upwards. Does this make sense? उसने कहा था लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, लेकिन उसने स्पेसिफाई नहीं किया था कि किस डायरेक्शन में मूव करने लगा है. तो हमने दोनों पॉसिबिलिटीज कंसिडर की. एक पॉसिबिलिटी कि रिंग इज जस्ट अबाउट टू मूव अपवर्ड्स, दूसरी पॉसिबिलिटी रिंग इज जस्ट अबाउट टू मूव डाउनवर्ड्स. ये हमने फर्स्ट केस देखा. When the ring was just about to move upwards, friction acts downwards. We just equated opposite forces. उससे हमारे पास T की वैल्यू आ गई. Any questions on this? No? Let's look at the second possibility. Case 2. Case 2 में क्या है? Ring is just about to move downwards. When the ring is just about to move downwards, friction is going to act in the upwards direction. So friction भी यहाँ पे ऊपर को लग रही है. And again, you equate opposite forces. R equals T cos 30. ये तो वही आ गया जो पहले आ रहा था, square root of 3 over 2 times T. And the other equation is T sin 30 equals, no, T sin 30 plus F. This equals 20. Again, you know the value of mu. Mu is 0.24. हमने पहले भी इनपुट किया था, तो F की जगह पे आप mu r डाल दें.
you get T over 2 plus 0.24 into the reaction भी आपने यहाँ पे find किया है. This is square root of 3 over 2 times T equals 20. Solve this equation further, you get a value of T from this as well. So T into 1 over 2 plus 0.24 into 0.12 into square root of 3 equals 20. इसको आप solve कर लेंगे आगे तो आपके पास आ जाएगी value of T. What do we get? 28.25. उसके बाद 2547. So that's 28.3 Newton. This is the other value of T that we get. इन दोनों values के ऊपर आपकी ring limiting equilibrium में होगी. देखिए क्या वैल्यूज आ रही हैं. सेकंड केस में आपके पास आ रहा है 28.3 न्यूटन और फर्स्ट केस में आपके पास आ रहा था 68.5 न्यूटन. सो व्हेन द टेंशन इज 68.5 न्यूटन, जब ये वैल्यू 68.5 न्यूटन है तो रिंग बिल्कुल ऊपर को मूव करने लगी है. और जब वैल्यू दूसरी है 28.3 न्यूटन तो ये इसका कंपोनेंट ये कम होगा, वेट ज्यादा होगा, and the ring will just be about to move downwards. Okay, और उस केस में limiting equilibrium में होगी. So this is your second case. Any problem with this? ये आपके पास second possible value of T आ गई. This was an 8-mark question. Not a lot of working, बस थोड़ा सा सोचना पड़ा आपको कि दोनों साइड्स पे आपने फ्रिक्शन कंसिडर करनी है. In terms of working, it wasn't that much. All right. अच्छा आप मुझे बताएं कि अगर मेरे पास अगर टेंशन की वैल्यू होती 75 न्यूटन, what would happen? $68.5 न्यूटन पे क्या था? रिंग वाज जस्ट अबाउट टू मूव अपवर्ड्स. सो अगर 68.5 से ज्यादा कर देंगे हम टेंशन तो क्या होगा? इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स. अच्छा, व्हाट इफ द टेंशन वाज 20 न्यूटन? व्हाट अबाउट दिस? और लेट्स से 15 न्यूटन. अब क्या आएगा? 28.3 न्यूटन पे इट वाज जस्ट अबाउट टू मूव डाउनवर्ड्स. अगर उससे भी कम कर देंगे इसका मतलब है कि वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस कंपोनेंट ऑफ टेंशन. रिंग विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स. व्हाट इफ आई से द टेंशन इज 50 न्यूटन? व्हाट हैपेंस इन दिस केस? 50 न्यूटन पे क्या होगा? Anyone other than the people who speak every time? Yes, Mahan, you're saying something? It won't move. So it was not moving at 68.5 Newton. It was not moving at 28.3 Newton. 50 पे भी मूव नहीं करेगा. क्यों 50 पे क्यों मूव नहीं करेगा? Yes, it's neither moving downwards nor moving upwards. ये आपके दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जिन पे आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल मूव करने लगा है. 28.3 न्यूटन पे इट्स जस्ट अबाउट टू मूव डाउनवर्ड्स. 68.5 न्यूटन पे इट्स जस्ट अबाउट टू मूव अपवर्ड्स. एट एनी वैल्यू बिटवीन दीज नंबर्स आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम नहीं होगा, वो नॉर्मल इक्विलिब्रियम होगा. तो या तो आपकी टेंशन 68.5 से बड़ी हो तब मूव करेगा, ऊपर वाली साइड मूव कर जाएगा. अगर 28.3 न्यूटन से कम है तब वो नीचे मूव करेगा. अगर इन दोनों के दरमियान में वैल्यू है तो आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा. ओके, सो इफ दे आस्क यू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी फॉर विच दिस रिंग रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, अगर उसने रेंज ऑफ वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज है, रेंज ऑफ वैल्यूज पूछा हो कि जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट इन दिस केस रिंग इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो वो क्या रेंज ऑफ वैल्यूज होंगी? 28.5 न्यूटन, 3 न्यूटन, 28.3 न्यूटन
और 68.5 न्यूटन, इनके दरमियान में कोई वैल्यू होगी टेंशन की, तो आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहाँ पे उसने रेंज पूछी नहीं थी, अगर वो पूछे रेंज आपसे तो आप इस तरह से फिगर आउट करेंगे। ठीक है, ओके, यस सकीना, यू हैड अ क्वेश्चन। यहाँ पे तो उसने कहा लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू निकालनी है, तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम या तो 68.5 न्यूटन पे है, यहाँ पे रेंज नहीं है, यहाँ पे या तो ये वैल्यू है या फिर ये वैल्यू है, इन दोनों पे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होगा, उनके दरमियान में नॉर्मल नॉन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है अरीबा, यू सेइंग समथिंग? नो, हो गया क्वेश्चन आंसर? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वाली वैल्यूज पूछी है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज लिखेंगे। अगर उसने रेंज पूछी होगी तो फिर वो प्रोसेस सारा वही होएगा, एंड पे जाके यू हैव टू राइट एन इनइक्वालिटी लाइक दैट। यस वाले, फ्रिक्शन विल नॉट बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यस, लेकिन दरमियान वाली की स्पेसिफिक वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते उस वजह से, बिकॉज हम एफ इक्वल्स म्यू आर नहीं ले सकते हैं, सो इसलिए हम एक्सट्रीम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे उसमें भी, और फिर हम कहेंगे इसके दरमियान में कहीं पे हो सकता है इक्विलिब्रियम। ओके, वो तो फिर कुछ कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, उसमें कोई स्पेसिफाइड तो नहीं है। इक्विलिब्रियम 50 पे भी होगा, 40 पे भी होगा, 30 पे भी होगा, देयर इज नो वन यूनिक वैल्यू, इक्विलिब्रियम कहीं भी हो सकता है दरमियान में। एंड देन वी हैव अ 5 मिनट ब्रेक आफ्टर दैट, सो 11:25 पे वी रिज्यूम। ओके, फर्स्ट 5 मिनट्स में आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, एंड देन विल हैव अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स।
मैं भी सिक्के कर रहा था यहाँ पे. Okay, so we have a break now. If you are very curious about what the answer is going to be, you can keep doing it. Uh, but we have a break right now. 11:25 पे resume. Okay. क्यों? किसने कितना काम किया? रामीन और अमीलिया के अलावा किसने क्वेश्चन ही नहीं किए? अच्छा 2 और 26 किया था. तो बाकी सारे तो पहले से असाइन है. इसमें से 10 हो गया. You can move somewhere else. इधर उधर. अब मैंने लिया भी नहीं. मिल जाएगा. देख दो देना. मैं कल परसों.
कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास. पेशेंस सही होता है, सब्र जरूरी है इंसान में होना. The first one. 4.4957. फ्री स्टार्ट हो रहा है. All right, chale, let's assume. Let's do this. Question number 50. How many of you are done with this? Okay, good. The diagram shows a particle of mass 0.6 kilograms. That means weight is 6 Newton, not 60 as some of us mistakenly wrote earlier. 0.6 kilograms mass hai. Weight is going to be 60 Newton. Angle 25 degrees है इस plane का. आपके पास एक particle at which this force is acting, which is P. Coefficient of friction is 0.36. Particle is in equilibrium. Given that the particle is in equilibrium, find the set of possible values of P. अब देखें 3 possible cases हो सकते हैं इस particle के लिए. या तो ये equilibrium में हो सकता है, या ये ऊपर मूव कर रहा हो सकता है, या नीचे मूव कर रहा हो सकता है. ये 3 possibilities हैं, right? हमने वो values find करनी है P की जिसपे वो equilibrium में रहेगा. Okay? हम क्या करते हैं, हम इक्विलिब्रियम के 2 एक्सट्रीम केसेस फिगर आउट करते हैं. एक केस क्या है कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे मूव करने लगा है. देखिए आपके पास 3 केसेस है. सो यू हैव इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन द मिडल. इसका कुछ इंटरवल होएगा आपके पास, इस रेंज के अंदर आपका इक्विलिब्रियम होगा. या फिर आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे मूव कर सकता है, या फिर आपका ऑब्जेक्ट राइट साइड पे मूव कर सकता है. ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, राइट? व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज कि इक्विलिब्रियम किस इंटरवल में रहेगा, कौन सी रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ पी में रहेगा. नाउ रादर देन थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दोज वैल्यूज, वो हम कर भी नहीं सकते डायरेक्टली इस तरह से. ये जो दरमियान में सारी वैल्यूज हैं, हमें ये फिगर आउट करनी है कि ये क्या रेंज है जिसमें ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा. ये पूरी रेंज फाइंड करनी है, ठीक है? What we do is we say let's consider this cutoff point and consider this cutoff point. इन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल इज जस्ट अबाउट टू मूव टुवर्ड्स द राइट साइड. ये इक्विलिब्रियम और इस स्टेट के बिल्कुल दरमियान वाली स्टेज है, जहाँ पे जो कट ऑफ पॉइंट है जिसपे इक्विलिब्रियम से वो राइट वाली स्टेज पे मूव करेगा. दैट्स लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल राइट साइड पे मूव करने लगा है. दिस इज वन एक्सट्रीम पॉइंट. And the other extreme point is when the object is just about to move
टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ये दूसरी एक्सट्रीम है कि वो लेफ्ट पे बिल्कुल मूव करने लगा है। अगर हमें ये दोनों वैल्यूज पता चल जाए तो हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान वाली जो सारी वैल्यूज हैं उनमें पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो we're looking for two extreme cases, राइट? ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हम फिगर आउट करना चाह रहे हैं। अब उसने लिमिटिंग इक्विलिब्रियम यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया। उसने कहा है find the set of possible values of p for which the particle remains in equilibrium। अब इक्विलिब्रियम में नॉन लिमिटिंग भी हो सकता है, लिमिटिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यूजिंग दिस रीजनिंग व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कंसिडरिंग टू एक्सट्रीम केसेस। एक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम जब पार्टिकल बिल्कुल लेफ्ट साइड पे मूव करने लगा है, एक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम जब पार्टिकल बिल्कुल राइट पे मूव करने लगा। ये आपके पास एक्सट्रीम केसेस आ गए। इनके दरमियान वाली सारी वैल्यूज के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। Does that make sense? So just like the previous question, we considered two separate cases here. ये हम दो केसेस बनाते हैं। First case, the particle is just about to move up the plane, ऊपर की तरफ मूव करने लगा है। When it's about to move up the plane, friction is going to act in the downward direction। यहाँ पे आपको नहीं पता कि उनको किस डायरेक्शन मूव करने लगा है, तो आपको पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अच्छा ऊपर मूव करने लगा है इसलिए फ्रिक्शन नीचे को लगेगी। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे द पार्टिकल जस्ट अबाउट टू मूव डाउन एंड इन दैट केस फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन। दो आपने सेपरेट केसेस बना लिए इस तरह से। अब इन दोनों केसेस के अंदर यू हैव टू फिगर आउट ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। यू हैव रिएक्शन, वेट है नीचे 6 न्यूटन, उसके कंपोनेंट्स निकाल लिए और आपने फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर लिया। एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज इक्वेट ऑपोजिट फोर्सेस, लेफ्ट वाली फोर्स राइट के इक्वल, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल। जब आपने फ्रिक्शन नीचे को एज्यूम किया यानी पार्टिकल ऊपर को मूव करने लगा है, उस केस के अंदर when you solve those two equations simultaneously you get 4.49 न्यूटन at the end। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है, जब पार्टिकल बिल्कुल ऊपर मूव करने लगा। सो ऊपर मूव करने के लिए आपको इतनी फोर्स चाहिए, ठीक है, मिनिमम। इससे ज्यादा होगी तो ऊपर मूव करने लग जाएगा। The other possibility was that the particle is just about to move in the downward direction। It's just about to move down the plane। When it is just about to move down the plane, that means friction is going to act up the plane। वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। When this is friction, बाकी सब कुछ वही रहेगा। आपने फिर से ऑपोजिट फोर्सेस इक्वेट करनी है, लेफ्ट वाली फोर्स राइट के इक्वल, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल, and this gives you P equals 0.578 न्यूटन। 582 आ रहा है? Okay, can anyone else confirm this as well? 578। आपने एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं यूज की होंगी, वो चेक कर लें, एक्यूरेसी का मसला है। 0.578 न्यूटन यहां से आ गया। अब ये आपके पास लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वाले केसेस हैं, ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। उसने कहा था फाइंड द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p फॉर व्हिच द पार्टिकल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। वो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ p could be anything between these two values 0.578 and 4.49। अगर इनके दरमियान में कहीं पे होगा तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये दोनों वैल्यूज होती हैं तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होगा, इसके दरमियान में कुछ भी होगा तो नॉर्मल इक्विलिब्रियम होगा। So this is the final result that you have to give here। In the previous question they asked us for two values for which the ring is in limiting equilibrium। उसके आंसर में आपने बस वो दो वैल्यूज लिखनी थी। यहाँ पे उसने लिमिटिंग इक्विलिब्रियम नहीं कहा, उसने कहा कि फाइंड द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p फॉर व्हिच इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। नाउ इट डजंट मैटर वेदर इट्स लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग, आपको वो पूरी रेंज निकालनी है। आपने दो एक्सट्रीम वैल्यूज निकाली और आप कहेंगे कि इनके दरमियान में आप कहीं भी हो सकते हैं। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ओके, ये सकीना इक्विलिब्रियम में है, इन दोनों वैल्यूज पे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम ना, ठीक है। Any questions on this? No? Yes. Dynamic equilibrium क्या होता है वाला? When the object is moving at constant speed। So इसके अंदर वो भी, यहाँ पे हम सिर्फ फोर्सेस कंसिडर कर रहे हैं।
उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि रेस्ट पे है या नहीं है, सो इट डजंट रियली मैटर। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे इक्विलिब्रियम में होगा, अगर मूव कर रहा है तो मूव करते हुए इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन इस केस में मूव करते हुए हो नहीं सकता वैसे, क्योंकि मूव करते हुए आपकी फोर्सेस कांस्टेंट रहेंगी ना। अगर कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। वो तो यहाँ पे भी जीरो है वैसे, दरम्यान में भी आपकी रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। फ्रिक्शन चेंज या मूव करते हुए फ्रिक्शन चेंज नहीं हो सकती है, फ्रिक्शन इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे तो फ्रिक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इफ द वैल्यू ऑफ पी वॉज 2 न्यूटन, then the friction would not be at its maximum value, even though ये equilibrium में होएगा। तो फिर तो आपके पास रेंज नहीं आती ना, कोई फिर एक स्पेसिफिक वैल्यू आती, फिर कोई रेंज नहीं आती आपको उस केस के अंदर। हाँ, तो वो जब मैक्सिमम फ्रिक्शन दोनों के अंदर मैक्सिमम फ्रिक्शन ही होती, इसका मतलब है कि या तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी होती है उसमें ऑब्जेक्ट एक साइड पे कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा होता, या ये वैल्यू होती जिसमें दूसरी साइड पे कांस्टेंट स्पीड मूव कर रहा होता। ये जो सिचुएशन है, दिस इज द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यहाँ पे मूव नहीं कर रहा, ये रेस्ट पे है। Okay, so everybody else don't get confused by that. It wasn't that important from the exam perspective. Okay, a block of weight 7.5 Newton is at rest on a plane which is inclined to the horizontal at angle alpha, where tan alpha is 7/24. ये आपके पास इस angle का tan दिया हुआ। Okay, the coefficient of friction between the block and the plane is mu. The force of magnitude 7.2 Newton acting parallel to the line of greatest slope is applied to the block. When the force acts up the plane, the block remains at rest. Okay. So weight of the block is 7.5 Newton. That is a force that's acting downwards like this. 7.5 Newton. ये आपको tan alpha दिया हुआ है, so in case you need to resolve any force, आपको ये angle use करना पड़ सकता है। अब क्योंकि देखें उसने नीचे जो कुछ करने के लिए कहा हुआ है, इसमें आपकी एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, फ्रैक्शंस हैं। यू शुड नॉट बी कन्वर्टिंग दिस टू एनी डेसिमल वैल्यू। आपको अल्फा नहीं फाइंड करना यहाँ से, यू शुड डायरेक्टली फिगर आउट साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा फ्रॉम दिस। एग्जैक्ट वैल्यूज आपको इसके निकालनी है। हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। tan alpha is 7/24. Tan is perpendicular over the base, so hypotenuse is going to be 7 square plus 24 square, square root of that hypotenuse, and that turns out to be 25. Sin alpha क्या हो जाएगा? Perpendicular over hypotenuse 7/25, and cos alpha will be 24/25. Does everyone get this? Tan given था, उससे हमने sin और cos निकाल लिया. Considering a right angle triangle, so let's say we have this right angle triangle. Perpendicular was 7, this was 24, this angle was alpha, hypotenuse हमने उसका निकाल लिया, this turned out to be 25. So we have the angles, we will need to use this when we are resolving components. Yes, Ariba. उसने नीचे सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में देखें, प्रूव करने के लिए कहा हुआ है कोई इनइक्वालिटी दैट इज 17/24। डेसिमल्स में कुछ कर देंगे तो वो तो फिर इस तरह से फ्रैक्शन नहीं आएगी, वो तो डेसिमल्स में आ जाएगा कोई। या तो उसने एग्जैक्ट, इट्स बेटर टू डू इट दैट वे, यस, क्योंकि उससे एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं आएगी। जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। अगर उसने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं स्पेसिफाई की हो, या तो एग्जैक्ट स्पेसिफाई कर दे, देन यू हैव टू डू इट दिस वे। या फिर अगर इन दिस इस तरह से, फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 17/24, इफ यू वर टू डू इट इन डेसिमल्स, यू वुड नॉट बी एबल टू प्रूव दिस, या नहीं होगा, दैट्स नॉट अलाउड। जब उसने एग्जैक्ट इस तरह से पूछा हो तो कैलकुलेटर में आप ऐसे नहीं कर सकते कि अच्छा अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ 7/24, तो आप कैलकुलेटर में डाल दें साइन of tan inverse of 7/24.
You should not be doing that. Although calculator दे देगा आपको ये कभी कभी देगा, कभी नहीं भी देगा. इसमें एग्जैक्ट शायद दे रही है. इस केस में कैलकुलेटर दे रहा है आपको एग्जैक्ट वैल्यू, बट नॉट ऑलवेज. लेकिन अगर दे भी देगा आपको वर्किंग शो करनी है. यस, वो तो एग्जैक्ट वैल्यूज होती है ना. यहाँ से अगर आप अल्फा निकालेंगे, ये देखें आप, यहाँ से अगर tan अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा 7/24 था. यहाँ से अगर आप अल्फा फिगर आउट करेंगे, दैट इज नॉट एन एग्जैक्ट नंबर. 16.2, 60 एंड सो ऑन. इट्स एन इरैशनल नंबर. अब ये वैल्यू अगर आप साइन अल्फा में इनपुट करेंगे विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर वैल्यू, अगर आप ये वैल्यू डालेंगे साइन में, आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा. सो दैट्स व्हाई यू शुड नॉट. वो तो अगर 0.2 आपके पास एग्जैक्ट आ रहे हैं ना, तो डिफरेंस इसमें ये है कि अगर 0.24 आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, नाउ दिस इज एन एग्जैक्ट नंबर. इसको आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको कैलकुलेटर को इसकी एग्जैक्ट फॉर्म दे देगा, 6/25 दे देगा इसमें. ओके, दैट्स फाइन बिकॉज दिस इज एन एग्जैक्ट नंबर. इसकी वर्किंग नहीं शो करनी है आपने. लेकिन इसका मसला ये है कि ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है. ये जो ऊपर हमने अल्फा निकाला है, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट नंबर. तो इसमें ये अलाउड नहीं है, इसका नहीं कर सकते. अच्छा, लेट्स गेट बैक टू दिस. वी हैव ओनली अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट. हमने एंगल फिगर आउट कर लिया. ये फोर्सेस हैं आपके पास. फर्स्ट फिगर की बात हो रही है. 7.5 न्यूटन इसका वेट है. When the force acts up the plane, the block remains at rest. Rest पे तो क्या मतलब है? Equilibrium है. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है तो इक्विलिब्रियम है. We have to show that mu is greater than or equal to 17/24. सबसे पहले देख लें फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं इसके ऊपर. ये ब्लॉक है, इसके ऊपर एक तो रिएक्शन एक्ट कर रहा है. We're talking about figure 1 for now. This is reaction. What else? इसमें या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात हुई है, तो फ्रिक्शन होएगी. फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगी? वेट को रिजॉल्व करके हमें देखना पड़ेगा कौन सी साइड पे फोर्स ज्यादा लग रही है. ऊपर 7.2 न्यूटन है. लेट्स रिजॉल्व वेट. वेट के दो कंपोनेंट्स आपके पास आएंगे. One is going to be like this. ये क्या होएगा? 7.5 cos alpha. If this angle is alpha, this angle here is also alpha. So this is 7.5 cos alpha, and this one is 7.5 sin alpha. Now figure this out, whether this is greater or this is greater. Sin alpha की value है हमारे पास. You'll see 7.2 जो ऊपर वाली फोर्स लग रही है, that is greater. राइट वाली फोर्स, ये फोर्स बड़ी है एज कम्पेयर टू दिस फोर्स. तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगनी चाहिए? डाउनवर्ड्स. So friction should act in this direction. ये आपकी सारी फोर्सेस हैं. क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ था कि ऑब्जेक्ट को आप ऊपर पुल कर रहे हो. जब ऊपर पुल कर रहे हो तो ऑफ कोर्स फ्रिक्शन पर नीचे पड़ेगी. अच्छा, so this is the first part. उसने कहा show that mu is greater than or equal to 17/24. Now, how do we do this? Any ideas? Yes, Sakina? अच्छा, एक तो उसने कहा है रेस्ट पे इक्विलिब्रियम में, राइट? तो ऑपोजिट फोर्सेस क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए एक तो. अच्छा, हम वो उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे. लेफ्ट वाली फोर्स राइट वाली फोर्स के इक्वल होनी चाहिए, और अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होनी चाहिए. What's the upward force here? R should be equal to 7.5 cos alpha. R equals 7.5 cos alpha. ये आपकी parallel to surface along the surface forces हैं, और ये perpendicular forces हैं. R and 7.5 cos alpha. So R equals 7.5 cos alpha. That's one equation. And 7.5 sin alpha
plus f equals 7.2. 7.5 sin alpha plus f equals 7.2 न्यूटन. ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई. उनके ऊपर रेस्ट पे था, इक्विलिब्रियम में है, they have to be equal. Is that all right? R की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 7.5 into cos of alpha. What's cos of alpha? 24 over 25. ये आप कैलकुलेटर में डालें, क्या आता है? 36 over. Okay, this is R. ठीक है. Now, what about the other one? 7.5 into sine of alpha. Sine alpha was 7 over 25. Plus friction equals 7.2. What value of friction do we get from this? 5.1 Newton. We've got the friction and we've got, अच्छा ये fraction में क्या आता है 5.1? 1 over 10. अच्छा चलिए let's say हमने decimals में लिख लिया होता है यहाँ पे 5.1 Newton और इसको भी decimals में लिख देते हैं 7.2 Newton. ये हमने opposite forces को equate कर दिया. We got a value for friction, we got a value for reaction. ये दोनों आ गए हमारे पास. अब उसने कहा है कि ये inequality prove करें. Inequality कहाँ से आ गई है? Where does that come from? Equilibrium. Remember मैंने आपको एक चीज बताई थी when we did friction. ये तीन केसेस हमने किए थे. इक्विलिब्रियम के अंदर दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हो सकता था या नॉन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हो सकता था. और फिर एक था कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में और जब ऑब्जेक्ट मोशन में है, इन दोनों के अंदर फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर होती है, म्यू आर के इक्वल होती है. लेकिन अगर उसने स्पेसिफाई किया हो कि इक्विलिब्रियम है और उसने बताया ना हो कि वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, नॉन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, तो क्या होता है? फ्रिक्शन या तो इक्वल टू म्यू आर होती है या फिर लेस देन म्यू आर होती है. सो वी गेट दिस केस f less than or equal to mu r, and I wrote there at that time as well, it's used sometimes for proving some inequalities. जब भी कोई inequality prove करने का कहेगा आपको, this should come to your mind, f less than or equal to mu r. okay, तो आप यहां पे जाएं, फ्रिक्शन शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू आर. इसके अंदर बस वैल्यूज इनपुट कर दें. 5.1 that's less than or equal to mu into 7.2. you get 5.1 over 7.2. mu is greater than or equal to this. इसको आप कैलकुलेटर में डालें, देखिए आपको क्या मिलता है. 51 over 72 which is 17 over 24. so mu is greater than or equal to 17 over 24. आपने बस इक्वेट किया दोनों को जिस तरह नॉर्मली करते हैं, और फिर क्योंकि इक्विलिब्रियम था, f is less than or equal to mu r, just input values, you get this. ठीक है. Now it says when the force acts down the plane, like in this second figure, the block slides downwards. It's not in equilibrium anymore. अभी नीचे स्लाइड करने लग गया. Show that mu is less than 31 over 24. सबसे पहले forces represent कर लेते हैं. ठीक है, I'm going to copy this figure and paste it there. Second part. Okay, this is the figure. सबसे पहले हम क्या करते हैं? Forces को represent कर लेते हैं. ठीक है, forces को represent कर लेते हैं. Weight कितना होएगा? 7.5 Newton था weight. What other forces are acting on this? Reaction. Friction किस साइड पे एक्ट करेगी? ऊपर वाली साइड पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही. उसने कहा नीचे मूव कर रहा है. इनफैक्ट जब नीचे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा उसको अपोज करती है, तो राइट साइड पे लगेगी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. सो वी हैव रिप्रेजेंटेड ऑल फोर्सेस ऑन द डायग्राम. 7.5 को रिजॉल्व कर लेते हैं. इसके दो कंपोनेंट्स आ गए, एक इस डायरेक्शन में आ गया, एक इस डायरेक्शन में आ गया. दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा, सो वी हैव 7.5 cos alpha
and 7.5 sin alpha. ठीक है, अल्फा की वैल्यू में पता है हमें, साइन अल्फा पता है इनफैक्ट, साइन अल्फा कॉज अल्फा पता है, यू कैन यूज दैट। ओके, साइन अल्फा कॉज अल्फा में पता है। अब क्या करें, इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, इक्वेट कर दें। अच्छा अच्छा, आप क्या ऐसे कह रही हैं कि आर इक्वल 7.5 कॉज अल्फा, सो दिस थिंग इक्वल 7.5 कॉज अल्फा। ओके ठीक है, और आप कह रही हैं कि एफ इज इक्वल टू 7.2 न्यूटन प्लस प्लस दिस, ये तो इक्विलिब्रियम में होता है। अच्छा हाँ हाँ, एक मिनट, पहले दूसरा परपेंडिकुलर वाला पार्ट, पहले परपेंडिकुलर वाला पार्ट देख लें। परपेंडिकुलर पार्ट में ये और ये इक्वल होंगे, क्यों? या इट्स स्लाइडिंग डाउन द सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस कोई मूवमेंट नहीं है। अब क्योंकि परपेंडिकुलर टू सरफेस कोई मूवमेंट नहीं है, तो जो परपेंडिकुलर फोर्सेस है वो तो इक्वल है, एंड दिस विल ऑल, एक वो देखते हैं, अभी परपेंडिकुलर देख रहा है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये वाली जो फोर्सेस है इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। ये हमेशा इसी तरह से होगा, जब भी आपके पास कोई सरफेस है, सरफेस के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इट विल ऑलवेज मूव अलोंग द सरफेस। परपेंडिकुलर टू सरफेस हमेशा इक्वल हुआ करेगी फोर्सेस, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर 2D मोशन नहीं है, तो प्रोजेक्टाइल वगैरह उस तरह की चीजें नहीं है आपके सिलेबस में, मैथ्स के सिलेबस में। तो आपका ऑब्जेक्ट या तो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, मतलब या तो अलोंग द सरफेस मूव कर रहा होगा, या फिर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा। ये नहीं हो सकता कि वह दो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, यस, जब भी सरफेस होएगा आपकी परपेंडिकुलर मूवमेंट नहीं हुआ करेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर फोर्सेस को हमेशा इक्वेट किया करना है। ठीक है, सो परपेंडिकुलर फोर्सेस को आपने इक्वेट कर दिया, सो अगेन आप कह सकते हैं दिस इज द अपवर्ड फोर्स, दिस इज द डाउनवर्ड फोर्स अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन। ये आपकी राइट साइड वाली फोर्स है और ये आपकी लेफ्ट साइड वाली फोर्स है। नाउ द अपवर्ड फोर्स इक्वल्स द डाउनवर्ड फोर्स, ये हमेशा ऐसे ही हुआ करेगा whenever we have surfaces involved like this। अच्छा, इनको दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास उससे क्या आता है, R इक्वल 7.5 cos अल्फा, ये हमने पहले भी फाइंड किया था पिछले पार्ट में, आए थे दिस वाज 7.2 न्यूटन। ये R की वैल्यू हमने पिछले पार्ट में भी फाइंड की थी। ठीक है, एग्जैक्टली द सेम वैल्यूज, उनके परपेंडिकुलर फोर्सेस कोई चेंज नहीं हुई है। नाउ व्हाट अबाउट फोर्सेस अलोंग द प्लेन? देखिए उसने कहा है कहाँ पे मूव कर रहा है, इट्स स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। नाउ इफ इट्स स्लाइडिंग डाउन द प्लेन, इट मीन जो नीचे वाली फोर्स है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द फोर्स एक्टिंग टू द राइट साइड, अदरवाइज तो मूव नहीं करेगा वो। अब नीचे कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, 7.2 और 7.5 साइन अल्फा। सो इन दिस केस आर बेसिकली सेइंग जो लेफ्ट वाली फोर्स है वो राइट वाली फोर्स से ज्यादा है। दिस इज द इनइक्वालिटी दैट यू हैव इन दिस केस, जिस साइड में मूव कर रहा है उस वाली फोर्स ज्यादा है as compared to the other side। okay, लेफ्ट पे कौन कौन सी फोर्सेस है, 7.2 प्लस 7.5 sin alpha, this should be greater than f 7.5 into sin alpha की वैल्यू क्या थी, 7/25, we figured this out before, it's greater than f। अब जो उसने प्रूव करने के लिए कहा है वो म्यू की टर्म्स में, एफ म्यू आर के इक्वल होगा। वो तो ठीक है, बट इज एफ इक्वल टू म्यू आर? जब
ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होती है। जब ऑब्जेक्ट या लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है तब भी एफ इक्वल्स म्यू आर होता है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तब भी एफ इक्वल्स म्यू आर है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सो एफ इज इक्वल टू म्यू आर इन दिस केस एज वेल। तो एफ की जगह पे आपने म्यू आर डाल दिया, एंड नाउ यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई दिस। आर की वैल्यू आपके पास वहां पे है, उसको यहाँ पे इनपुट कर दें, यू गेट म्यू इंटू 7.2। लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करें, 9.3। ओके, नाउ 9.3 एग्जैक्ट है ना वो आगे, ये आप कैलकुलेटर में डाल दें, 9.3 over 7.2, you'll get mu less than 31 over 24। ये आपने प्रूव करना था। अब देखिए म्यू का जब मैं लेफ्ट साइड पे लेकर आया हूं तो साइन चेंज हो गया, राइट? मैं उल्टा इनइक्वालिटी उल्टी लिख दिया, तो ये ग्रेटर था, ये लेस देन हो गया। दिस इज द इनइक्वालिटी दैट वी गेट हियर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। Question number 34. There's a block of mass 2 kilograms that's at rest on a horizontal floor. The coefficient of friction between the block and the floor is mu। 2 kilograms का mass है तो weight is going to be 20 Newton. Downwards weight लग रहा है, there's a force of 12 Newton that's acting here. Remember हमने क्या कहते हैं, कहाँ पे represent कर लिया आप forces को? It's easier to think that way कि जिस डायरेक्शन में वो लग रहे हैं उसी साइड पे उसको रिप्रेजेंट कर लें। ओके, सो 12 न्यूटन कहाँ पे लग रही है? राइट एंड डाउन, तो इट्स बेटर टू रिप्रेजेंट इट इन दिस साइड। आपके लिए सोचना थोड़ा सा आसान होगा। इफ यू डोंट अग्री विद मी दैट्स ओके, आप उस तरह रख सकते हैं। आई फाइंड इट इजियर दिस वे, 12 न्यूटन को आप यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ये दो फोर्सेस हैं। ठीक है, उसने दिया हुआ tan अल्फा इक्वल्स 3/4, उसने बताया वो करता है। So if that angle was alpha, तो ये नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये भी अल्फा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, इट्स योर चॉइस अगेन। अच्छा, when the applied force acts downwards, like in the first case, the block remains at rest. Equilibrium, फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, आपके पास क्या कौन कौन सी फोर्सेस होंगी? रिएक्शन होगा, फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगी? लेफ्ट साइड पे, राइट? ये सारी फोर्सेस हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व करें, ऑपोजिट फोर्सेस को इक्वेट कर दें, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल, लेफ्ट वाली फोर्स राइट के इक्वल, फ्रिक्शन भी आ जाएगी, आर भी आ जाएगा, देन यू से एफ इज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर। यही हमने वहां पे किया था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, ये हो जाएगा, एफ और आर फाइंड कर लेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है? व्हेन द फोर्स अप्लाइड इज अपवर्ड्स लाइक इन द सेकंड फिगर, अगर ये सेकंड वाला केस है, उसमें क्या होगा? फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, द ब्लॉक स्लाइड्स अलोंग द फ्लोर, द ब्लॉक स्लाइड्स अलोंग द फ्लोर। अगेन कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? आर है, वेट 20, ये आपकी फ्रिक्शन है, 12 के कंपोनेंट्स निकाल लें, दिस इज 12 कॉस अल्फा, दिस इज 12 साइन अल्फा। अब परपेंडिकुलर फोर्सेस तो इक्वल होंगी क्योंकि अलोंग द सरफेस मूव कर रहे हैं। आर प्लस 12 साइन अल्फा दैट शुड इक्वल 20। अब क्योंकि राइट साइड में मूव कर रहे हैं, 12 कॉस अल्फा शुड बी ग्रेटर देन एफ। एफ की जगह में म्यू आर डाल देंगे, उससे आपके पास एक और इनइक्वालिटी आ जाएगी। एग्जैक्टली वही चीज है। पिछले वाले के कितने मार्क्स थे? 6 मार्क्स थे, इसके 8 मार्क्स थे। दैट वाज 4 and 2, दिस इज 5 and 3।